And the Oscar goes to The Elephant Whisperers, Kartiki Gonzalez and Guneet Monga. जब ख्वाब सच होते हैं तब लगता है कि oh my god, you know, it really happens. It Yeah. is beautiful and surreal. But don't think that you can design something for the West. You can't. You can only be honest to your craft. Yeah. And tell a story which is close to your heart, your land, and you know that this is meaningful to you. Yeah. ऑस्कर सिर्फ वो एक सेरेमनी की रात नहीं होती, ऑस्कर इज बेसिकली यू आर ऑन दिस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इलेक्शन कैंपेन जिसमें आप 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं. Yeah. Of course, but it was also like a timer ticking, and I was pushing. My director wanted to hug me, and I was like, ऊपर जाओ, time नहीं है. And सोने से पहले Elephant Whispers चला दो. So she said that from any Pixar film or Disney film, this is their first films. And those 2-year-olds, they don't blink, and they sit there and they see the film, and I have videos of them. So it was just crazy. ऑस्कर्स एक ऐसा अवार्ड है जो कि सिर्फ फिल्म के क्राफ्ट को नहीं देता. आपने कितनी अच्छी फिल्म को मार्केट की, कितना अच्छा कैंपेन लड़ा, कि तो उन सब प्रोसेसेस का एक एमलगमेशन एक तरह से. हाय गाइस, माय नेम इज तोनाक्षी कालरा और आज मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल लोगों के साथ खड़ी हूँ. मैंने अभी इनका इवेंट अटेंड किया है इन द ब्लूबेल्स स्कूल इन दिल्ली. एंड ये स्पेशल लोग इसलिए भी हैं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ. एंड आई डोंट थिंक वैसे मुझे कुछ खास इंट्रोडक्शन की यहाँ पे ज़रूरत है, बट फिर भी दे देती हूँ क्योंकि वो मेरा फ़र्ज़ बनता है देना, और मैं देना चाहती हूँ इंट्रोडक्शन. सो ये वो लोग हैं जो इंडिया को ऑस्कर में रिप्रेजेंट ही नहीं करके आए, बल्कि ट्रॉफी हमारे घर इंडिया में लेकर आए हैं. सो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बोथ. गुनीत मोंगा ने ऑलरेडी ऑस्कर जीता है फॉर द एलिफेंट विस्परर्स. देन शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीड्स भी नॉमिनेट हुई थी इन द ऑस्कर, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. देन यहाँ पर 2 और स्पेशल लोग हैं मेरे साथ जिनके स्कूल से ये पास आउट हुए हैं. मिस सोनल इज हियर हु इज द करंट प्रिंसिपल ऑफ ब्लूबेल स्कूल, एंड मिस सुमन इज हियर जो उस टाइम पे प्रिंसिपल थी और आज डायरेक्टर है. तो अब हम इन सब लोगों से यहाँ पर कलेक्टिवली बात करने वाले हैं. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गुनीत, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल शौनक. गुनीत, सबसे पहले मुझे सच बताना, कितना अनरियल था वो वाला मोमेंट जब आपका नाम अनाउंस हुआ? I mean, काफ़ी surreal था. It is beautiful and magical and is filled with gratitude. मतलब ऐसे ख्वाब होते हैं, लेकिन जब ख्वाब सच होते हैं तब लगता है कि oh my god, you know, it really happens. It is beautiful and surreal. There were all goosebumps on your body then? Of course, but it was also like a timer ticking, and I was pushing. My director wanted to hug me, and I was like, ऊपर जाओ, time नहीं है. Like move on to the next. It was very, very nice. Yeah. It was beautiful. Yes. Okay, and it was beautiful for us also to watch you there, Yes. giving the speech for that 45 seconds. क्योंकि मैंने सुना 45 seconds का आपको टाइमर दिया जाता है कि तब आपको सबको थैंक्स करना है उसके अंदर. वो कितना डिफिकल्ट होता है? 45 seconds मेरी कम है? डायरेक्टर ने किया था, मैंने बैक स्टेज हाँ. में किया था. And we both had our people to thank, and it was amazing. We divided our list. Yeah. And हम दोनों को उसको फ्रंट स्टेज पर और मुझे बैक स्टेज पर मौका मिला, but it was all beautiful. Okay. Shaunak, you tell me, it was your first time at Oscars as well. तो कितना surreal था वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए? How special was it? ऑस्कर सिर्फ वो एक सेरेमनी की रात नहीं होती, ऑस्कर इज बेसिकली यू आर ऑन दिस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इलेक्शन कैंपेन जिसमें आप 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं. माय कैंपेन एक्चुअली स्टार्टेड बिफोर Guneet's, and I was constantly working for a good 4 months. तो लगता है कि 4 महीने की कड़ी मेहनत जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली अलग अलग होटल, 50 फ्लाइट्स और उस सब का एक सॉर्ट ऑफ एंडिंग पॉइंट है, तो काफ़ी ओवरवेलमिंग लगता है और इमोशनल लगता है. Of course I was nervous. I was very happy कि नाटू नाटू and Elephant Whisperers won. I mean, to be honest, I wasn't very, मैं कुछ इतना crestfallen नहीं था कि जब हम नहीं जीते, but I was very happy because you meet और कब मौका मिलेगा, like Guneet and I met Tom Cruise and took a picture with him, और Steven Spielberg, और इन सब लोगों से कब मौका मिलता है, तो मैंने एक्चुअली प्रॉपर आपका फैन मोमेंट हुआ है दोनों का. इनफैक्ट एक डायरेक्टर है बैज लर्मन करके, और एक और एक्टर है कॉलिन फर्थ, उन दोनों को मैंने बताया था कि दोनों जो नॉमिनीज हैं वो एक ही स्कूल से हैं, और मतलब ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू इमेजिन कि कैसे एक ही स्कूल से सेम ईयर
दो अलग-अलग फिल्में के से रिलेटेड लोग हो सकते हैं। Yeah, definitely it was a huge coincidence Yes. कि दोनों सेम स्कूल से सेम ईयर में नॉमिनेट भी हो रहे हैं, तो दैट वाज अ वेरी क्रेजी थिंग फॉर अस आल्सो। मेरे को जब पता चला आई वाज शॉक्ड, मैं कहा ये अनरियल लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सुमन मैम, आप उस टाइम पर प्रिंसिपल थी जब ये इनका बैच था, दोनों का था, तो कुछ भी मोमेंट याद है उस टाइम को? क्योंकि आई अंडरस्टैंड प्रिंसिपल होते हैं एंड देन देयर आर इतने सारे स्टूडेंट्स, तो हर एक की क्वालिटीज को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट व्हेन यू रिकाउंट ऑल दोस मोमेंट्स, तो अभी कुछ याद है इनके बारे में जो आप बताना चाहें? बिल्कुल याद है, because I think when I said the other time Yeah. कि there was a lot of creativity in both of them. Yeah. Perhaps we didn't really realize, but they were participating in almost every single activity, which gave them a very well-rounded personality. Yeah. तो इसने खुद बोला, and she was never shy. She was always fearless, Yeah. and so was he. They had a mind of their own. They would express what they want to very fearlessly. Yeah. So I think that really sort of describes their personality. Yeah. And somewhere down the line, probably the creative sparks Yeah. has reached its peak. Yeah. And they were different. So that's how I remember them. एक और मोमेंट हमें अभी स्टेज पर पता चला जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, वो ये था कि कितना स्पेशल बॉन्ड रहा है आपका अपनी प्रिंसिपल के साथ। तो उसके बारे में ब्रीफली कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको दी गई थी? You know, as kids, you always, it's very, how do you say? I'm trying to find a word, but there is fear, there is respect, everything all at once. Just for your principal, because you're just like, she's the head of the school, and ma'am was always very accessible, which meant a lot. She always had time to hear. We were 2,000 plus kids, but uske andar se when you reach out, there's a process. She would hear you, and she would give you a very sound advice, or open up a window of your imagination. As kids, you need that support, you need that encouragement, rather than to be said, okay, just go back to your class. Like, okay, let's chat. You've come all the way, let's talk. So I remember those moments very, very clearly, and they meant a lot. They were like a high point in life, and I would go back to my home and tell all my kids, all my friends, कि आज मैंने सुमन मैम से बात की, मैंने उनसे ये पूछा, उन्होंने ये जवाब दिया. So that accessibility is rare and it's beautiful. Miss Sonal, please tell me honestly, जब लाइव स्ट्रीम हो रहा था ऑस्कर्स, आप देख रहे थे एंड आप like consistently follow कर रहे थे कि कौन जीत रहा है कौन नहीं? I remember the morning we came to the school, and me and another person, we were so excited. I think 5:30, yeah. And we came and we shared with ma'am, and we were very happy for her, and we were slightly sad for Shaunak. Yeah. But that's what life is all about, right? It's never the end, it's just the journey we're talking about. गुनीत, द एलिफेंट विस्परर्स एक ऐसा नाम बन गया, एक ऐसा टाइटल बन गया जो इस टाइम हर जगह OTT प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है। जितने लोगों को उसका नाम भी नहीं पता था, थैंक्स टू द ऑस्कर्स, द नॉमिनेशंस एंड एवरीथिंग एंड द विनिंग पार्ट ऑफ कोर्स, हर एक इंसान ने वो देख ली डॉक्यूमेंट्री एंड सबको पता चला कि कितना खास होता है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स का रिलेशनशिप। बट मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि आप तक ये कहानी कैसे पहुँची थी और कब पहुँची थी? मेरी डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाविस ने ये कहानी ढूंढी थी। वो इस रिजर्व के 20 मिनट दूर रहती हैं ऊटी में, एंड ये तमिलनाडु की ऐसे बॉर्डर पर रिजर्व है जहाँ तमिलनाडु गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है विद माहूट्स एंड विद एलिफेंट्स, एंड शी इज़ अ नेचुरल हिस्ट्री फोटोग्राफर, एंड शी स्टार्टेड फिल्मिंग बोमन एंड रघु, उनकी कहानी एक साल बनाकर, उनका ट्रेलर बनाकर, एक म्यूज़िक डालकर, शी रीच्ड आउट विद अ ट्रेलर, and it was amazing, to see a first-time filmmaker find a story, shoot and come to me with a trailer. And that's when we came on board, Netflix came on board, and now it's a global hit. 15-16 years of producing in my career, I've not seen fan art like this. We get fan art from around the world every day, hundreds and hundreds of pictures, DMs, emails, Twitter threads, just people making and coloring baby elephants and putting it up, kids loving it. So this film has definitely transcended age and transcended all nationalities, because kids from 2 years of age are mesmerized by the entire music, the elephants, the story, the reserve, the beauty of it, the photography, the entire 40 minutes of it, to like 90 plus years. So so it's so beautiful to be a part of it, and to be a part of putting that together and making it happen. And it took you 5 years? जी, मुझे 3-3.5 साल लगे थे. It was a 5-year journey for my director. Oh, okay, all right. तभी वो ऐसा आउटकम निकल के आया जिसने सबके दिल को छू लिया कहीं ना कहीं. Yes.
शौनक, आई रियली वांट टू नो कि आपने इतनी स्पेशल कहानी बनाई, इतनी रियल स्टोरी बनाई दिल्ली की, दो भाइयों की जिन्होंने बर्ड क्लिनिक खोला, बर्ड्स के लिए इतना काम किया, तो जब ये कहानी आप तक पहुंची कि ऐसा कुछ हो रहा है, रियल में हो रहा है, तो आपको कब लगा कि दिस इज द राइट टाइम कि इसी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए? आई थिंक डॉक्यूमेंट्री तब शुरू हो गई थी बिफोर आई एवर मेट द ब्रदर्स. तो एक्चुअली मुझे जो भी दिल्ली में रहते हैं उनके लिए ये जो हवा है वो एक सॉर्ट ऑफ स्पेशल चीज़ बनती जा रही है. ग्रेनेस जो हर विंटर हमें दिखती है, तो ये कि बहुत ही टैक्टाइल, हेवी, ओप्रेसिव, समटाइम्स स्कैरी, ऑलमोस्ट सेंटिएंट एक चीज़ फील होती है, राइट? हम सब जो भी दिल्ली में रहते हैं हम कॉन्स्टेंटली इससे प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं. तो मुझे कुछ इस पे प्लस फिलोसॉफिकल कुछ बनाना था ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप में. तो ये जो दो पहलू थे, हवा दिल्ली की और ह्यूमन बर्ड रिलेशन, उसके मिक्स करके कुछ बनाना था. एंड दैट्स व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन द वर्क ऑफ द ब्रदर्स. जब भाइयों का काम देखा तब ऑफ कोर्स ऐसा काम एक छोटे से बेसमेंट में 25,000 बर्ड्स को वो बचा चुके हैं 15 साल में. दैट्स इनक्रेडिबल. तो उसके बाद शुरू, और देन इट टुक अस अबाउट 3 years टू मेक. गुनीत, आपने ऑस्कर जीतने के बाद इनके लिए एक मैसेज लिखा था शौनक के लिए कि ऑस्कर्स बेशक अभी खत्म हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, लेकिन ऑल दैट बीट्स का जो इम्पैक्ट है इट विल लिव ऑन फॉरएवर. सो इस तरह का कॉम्प्लीमेंट पहली बार तो आपने इनके लिए लिखा, तो मुझे ये ज़रूर जानना है कि आपने खुद ऑल दैट बीट्स कब देखी थी? क्या वो ऑस्कर से पहले आप देख चुकी थी? और दूसरी चीज़ मुझे जाननी है, जिस तरह का कॉम्प्लीमेंट आपने इनके लिए लिखा, आपको ऑस्कर में सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसने दिया और क्या दिया? So I think it's a huge deal to get nominated. Yeah, तो शौनक का काम इतने बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया गया है, from Cannes to all the festivals to the whole year of celebration. So it's a testimony of craft. Oscars is I mean, I will mispronounce that word, but it's putting together of many things, of marketing, of release, distribution, putting the word out there. But as a film, it's one of the most beautiful films in its craft. And here is a young director representing India on the biggest stage in the world, which has to be celebrated with the biggest mouthpiece, because it's not just about the destination, it is about the journey and taking it all the way. So I'm in awe of Shaunak, and in fact Shaunak was very helpful for us in our journey, because he was there for 4-5 months, and he was there with a feature film. I was there with a short film for the last 1 month. And I was taking notes from him, and being from the same school, we had an instant connect and a bond, which really meant a lot. And in this huge world in LA, you're doing a campaign and you have a friend, and you have a beautiful filmmaker there to guide you and support you, each other. So that was beautiful. I got a lot of compliments, and I think some of the best ones were which just I really want to tell you, the 2-year-old kids who actually wake up and tell their mama, her mom was working for a big actor there, and she actually told me that they wake up and they ask कि elephant whispers चला दो, and सोने से पहले Elephant Whispers चला दो. So she said that from any Pixar film or Disney film, this is their first film, and this talks about second marriages, it talks about elephants, and those 2-year-olds, they don't blink, and they sit there and they see the film, and I have videos of them, so it was just crazy. He was asking something. Never mind. नहीं भूल गई, मतलब I'm having a blur of a moment, but it's too much. Actually बहुत भूख लग रही है. तो मैं आपको जल्दी छोड़ने वाली हूँ, आप टेंशन मत लो, मुझे पता है कि आप काफी देर से भूखे बैठे थे. One last question to both of you. ऑस्कर में गए, नॉमिनेट भी हुए, जीते भी, तो मुझे ये जरूर बताओ, और ये बाकी फिल्म मेकर्स के लिए भी कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चन जरूर पूछना चाहती हूँ कि आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ऑस्कर में क्या चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि इतनी सारी फिल्में बन रही हैं हर जगह. I think the shortcut of that is to firstly, of course, tell local stories, tell stories that are close to you. ऐसा मत सोचो कि आप किसी और के लिए बना रहे हो. जो आपको पसंद आया वहाँ से शुरुआत करो, and then if you're able to get to festivals,
get American distribution. It's very important to have a distributor in US Yeah. who will then support you to do an awards campaign. Yeah. So that for me is the key, and I keep telling this at every stage that I get, that don't think that you can design something for the West. You can't. You can only be honest to your craft, Yeah. and tell a story which is close to your heart, your land, and you know that this is meaningful to you. Yeah. Don't worry about everyone else, and everybody else will find the story, but constantly work towards finding American distribution. Okay. You have anything to say here? लार्जली द सेम, द ओनली थिंग टू ऐड इज कि देखिए काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं फिल्म में, और ऑस्कर्स एक ऐसा अवार्ड है जो कि सिर्फ फिल्म के क्राफ्ट को नहीं देता. आपने कितनी अच्छी फिल्म को मार्केट की, कितना अच्छा कैंपेन लड़ा, या कि तो उन सब प्रोसेसेस का एक एमलगमेशन है एक Yeah. तरह से. तो आपको ऑस्कर को समझना पड़ेगा, इट्स फिल्म प्लस मार्केटिंग, ओके. और वो भी इम्पोर्टेंट है, मतलब नॉट टू फ्राउन अपॉन कि, तो इन अ वे इट्स कि आपने फिल्म को कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूट किया, कितने लोगों को दिखाया, उस सब का एक सॉर्ट ऑफ जजमेंट कॉल है. ओके. अच्छा, इनकी ट्रॉफी इनके पास है, आपकी कहाँ है? वी वांट टू शो इट ऑफ अ लिटिल राइट नाउ. एक बार आप प्लीज कैमरा की तरफ दोनों अपनी ट्रॉफीज दिखा दीजिए, बिकॉज दिस इज समथिंग जिस पर हर इंडियन को इस टाइम प्राउड है, और ये वही ब्यूटी है जो इनके हाथ में है, जो हमने वहाँ स्टेज पर जरूर देखी थी, बट लाइव अभी देख रहे हैं, और लाइव आप इस चैनल पर जरूर देख रहे हैं, ENT लाइव पर जरूर देख रहे हैं. एंड लेट्स जस्ट से, लेट्स ऑल जस्ट से, वी डिड इट. Yeah, it's for Bluebells. Yes. We did it. Oscar comes to Bluebells. Yeah, absolutely. With this, huge congratulations to all of you here, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई थी और यहाँ तक पहुँची है, and I really hope कि हर साल कोई ना कोई ऑस्कर आता रहे इंडिया में. Bluebells, yeah, Bluebells, all right. Thank you very much for your time. Thank you so much. Thank you.